गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रैट होल माइनिंग। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि रात को जो है 41 वर्कर्स जो ट्रैप्ड थे सिल 11 बारकोड टनल में, उनको बचा लिया गया है। तो उनको बचाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो है रैट होल माइनिंग। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बोरिंग करती है मशीन या डायरेक्शनल ड्रिल देती है। एक स्पेशलाइज्ड टूल होता है ये इसमें, जो कि हॉरिजॉन्टल बोर्स या अंडरग्राउंड टनल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है या फिर डिग करता है। तो इसमें रोटेटिंग हेलिकल स्क्रू ब्लेड लगा होता है जिसको ऑगर कहते हैं, और इसी को ही जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है रोटेट करते हुए किसी भी माउंटेन में या किसी भी एरिया में ड्रिल किया जाता है। ये वर्क कैसे करता है? जो इसका ड्रिल हेड है वो एक ऑगर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक या मैकेनिकल सिस्टम जो है वो इसकी रोटेशन को पावर करते हैं, और वो मटेरियल को रिमूव करता रहता है टनल में से और उसको फ्लश आउट करता रहता है किसी ड्रिलिंग लिक्विड की वजह से, ड्रिलिंग फ्लूइड से, और पंप करता रहता है उसको ड्रिल स्ट्रिंग से, ठीक है। ये फ्लूइड इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पूरी जो ड्रिलिंग प्रोसेस है उसको ल्यूब्रिकेट रखा जा सके। अब रैट होल माइनिंग जो है वो एक नैरो हॉरिजॉन्टल एक तरह से टेक्निक है जो कि मेघालय में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। रैट होल इसमें इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि छोटी छोटी जो है वो पिट्स किए बनाए जाते हैं ग्राउंड के अंदर, जितने जो है एक पर्सन जिसके अंदर घुस सके और कोल को एक्सट्रैक्ट कर सके। जनरली जो है माइनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं रोप्स और बैम्बू लैडर्स का यूज़ करते हुए ताकि कोल तक पहुंचा जा सके। मैनुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल को प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। और दो तरह की ये मेनली होती है, साइड कटिंग प्रोसीजर जिसमें टनल्स जो हैं वो हिल स्लोप्स के आसपास जो है वो डग की जाती हैं। दूसरी होती है बॉक्स कटिंग। बॉक्स कटिंग में रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाई जाती है, वर्टिकल वर्टिकल पिट जो है वो डग करके, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल और सेफ्टी कंसर्न्स हैं इसमें क्योंकि अनरेगुलेटेड है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं होती है जो वर्कर्स को, कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई सेफ्टी गियर नहीं मिलती है, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सेफ़ भी नहीं है ये। और इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत किया जा रहा है, किया जाता है क्योंकि बहुत हजार्डस वर्किंग कंडीशंस होती है, एनवायरनमेंट भी बहुत डैमेज होता है, और कई बार एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले हैं जिससे कि इंजरीज और फेटेलिटीज़ होती है। तो इसको क्यों बैन कर दिया गया था और क्यों अभी भी बैन है ऑफ कोर्स? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको 2014 में बैन किया था, 2015 में इसको रिटेन किया गया बैन को, क्योंकि जो है इस प्रोसीजर में बहुत सा खतरा रहता है। खासकर रेनी सीजन में वाटर आ जाता है और इन माइनिंग एरियाज़ में उसकी वजह से जो है कई बार इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, जो कि इसमें ये माइनिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन मणिपुर वायलेंस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी जो है उसने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर वायलेंस के ऊपर। तो मणिपुर वायलेंस आपको याद होगा, कुकी और मीती पीपल के बीच में जो है वायलेंस हुआ था, और एसटी ट्राइब की डिमांड आई थी मीती कम्युनिटी की तरफ से, उसके अगेंस्ट जो है ये एक तरह से वायलेंस इरप्ट हुआ था जिसमें 70,000 लोगों को अपना घर गंवाना पड़ा था। तो अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर कमेटी जो है वो अपॉइंट की थी जो कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ एथनिक वायलेंस इन मणिपुर को एग्जामिन कर रही थी। तो ऑफ कोर्स उसने टाइमली अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। जो ये रीसेंट रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो है इस कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि जो वहाँ पे एनजीओज़ हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो विक्टिम्स के रिलेटिव्स को पीछे से भड़का रही हैं और कह रही हैं कि जो है बॉडीज़ जो हैं अपने विक्टिम्स की वो एक्सेप्ट मत करो, उसके लास्ट राइट्स करने के लिए गवर्नमेंट से एक्सेप्ट ही ना करो, और गवर्नमेंट से डिमांड करो कुछ अनवारंटेड डिमांड्स जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिमांड्स हैं वो ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज जो है वो करवा रही हैं ताकि जो है ये अ, अ, एक जो स्थिति है मणिपुर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बनी रहे, ठीक है। तो ये कमेटी का कहा जा रहा है कि ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत लार्ज नंबर में वर्क कर रही हैं मणिपुर में,
वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ इनको बैन करना ज़रूरी है, अगर ये अपने इस एटीट्यूड से नहीं हटती हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली अथॉरिटीज़ जो हैं चाइना में, उनमें उन्होंने एक इंक्रीज़ नोटिस किया है रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ का, जो कि कई पैथोजेंस के सर्कुलेशन से को जो है एट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो वायरस की तरह ज़्यादा एक्ट करता है, ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है बहुत तेज़ी से, बोथ साइड्स ऑफ द लंग में इन्फेक्ट कर सकता है। और ये इतना इन्फेक्शियस तो नहीं जितना एक वायरस होता है, पर फिर भी ये रेड ब्लड सेल्स को जो है वो ब्रेकअप करना शुरू कर देता है, स्किन रैश, जॉइंट पेन देता है, और इवन कुछ केसेस में निमोनिया जैसी स्थिति भी दे देता है, ठीक है। तो वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं वो, उनको कोई ना कोई ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसको इन्फेक्शन को डेवलप करने के लिए प्रोन रहते हैं। ट्रीटमेंट इसका मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देने से ही हो पाता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गल्फ ऑफ एडन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक यूएस नेवी वॉरशिप को एक डिस्ट्रेस कॉल आया कमर्शियल टैंकर से गल्फ ऑफ एडन में, जिसको आर्म्ड इंडिविजुअल्स ने सीज कर लिया था। तो गल्फ ऑफ एडन जो है वो एक एक्सटेंशन है इंडियन ओशन ओशन में, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच। तो गल्फ का नाम एदन के ऊपर रखा गया है, जो कि एक पोर्ट सिटी है यमन के कोस्ट में। ये जो गल्फ़ है ये लगभग 900 किलोमीटर लंबा है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट डोमिनेंट रिलीफ फीचर है वो है शिबा रिज, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन रिज सिस्टम की एक एक्सटेंशन है। इस ये ही एक जो गल्फ ऑफ एडन ही जो है वो एक क्रिटिकल पार्ट है सुएज कनाल शिपिंग राउट का भी, जो कि रेड सी और मेडिटरेनियन सी को कनेक्ट करती है। जो कुछ मेजर सिटीज़ जो इस गल्फ पर बनी हैं वो हैं एदन, मुकल्ला, अनवर, बलाफ, बेरबरा, बोसासो और जिबूती, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोजिला पास। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी जो है वो थंडर स्टॉर्म्स फोर्ज कर रही है 11,500 फीट पर नियर जोजिला पास, बैटल रेडी रहने के लिए हार्श विंटर में। तो जोजिला पास एक ऐसा माउंटेन पास है जिसको ऐसा एक माउंटेन पास है, हाई माउंटेन पास, जिसको हाई द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स भी कहा जाता है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है लद्दाख के। श्रीनगर श्रीनगर कारगिल ले हाईवे जो है वो इसी पर ही लोकेटेड है, ठीक है। तो उसी पर ही जोजिला पास लोकेटेड है, और ये ग्रेटर हिमालयन रेंज में ही जो है पाया जा लोकेटेड है रादर। और लगभग ये हाफ ऑफ द ईयर जो है वो हैवी स्नोफॉल की वजह से क्लोज रहता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इंडो पाकिस्तान वॉर भी जो है यहाँ पर हुई थी। जोजिला टनल भी बनाई जा रही है श्रीनगर ले हाईवे जिसको के ऊपर, और ये जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है ऑफ कोर्स। श्रीनगर को और लेह को कनेक्ट करने के लिए टनल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है और एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्ट्रोसैट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की पहली फर्स्ट मल्टी वेव लेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट जो है उसने 600 गामा रे बर्स्ट को डिटेक्ट किया है। तो एस्ट्रोसैट एक इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जो कि एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहा है स्पेस को। तो एस्ट्रोसैट को इंडियन लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी के साथ लॉन्च किया गया था सितंबर 2015 में। इसकी मिनिमम यूज़फुल लाइफ जो है वो 5 साल है, और ये 5 साइंटिफिक पेलोड्स को कैरी करता है ऑफ कोर्स। और इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हाई एनर्जी प्रोसेसेस जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स को एस्टिमेट करना, स्टार बर्थ रीजन्स को स्टडी करना, ब्राइट एक्सरे सोर्सेज जो है उसको न्यू जो है वो डिटेक्ट करना, डीप फील्ड सर्वे करना यूनिवर्स का अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रायथू बंधु स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन जो है रिसेंटली उसने अपना परमिशन विड्रॉ करी है तेलंगाना गवर्नमेंट को जो दी हुई थी फाइनेंशियल एड टू फार्मर्स जो है डिस्पर्स करने के लिए रायथू बंधु स्कीम में। तो रायतू बंधु स्कीम जो है वो फार्मर की इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2018 में इसको स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? जैसे आपकी किसान स्कीम है ना, पीएम किसान स्कीम, वैसे ही ये स्कीम है, ओके।
तो इसमें क्या किया जाता है, कैश ग्रांट दिया जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स ताकि डेट ट्रैप में ना फंसें इसलिए ये सपोर्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 5,000 पर एकड़ पर फार्मर, डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है हर फार्मर के अकाउंट में। और ये असिस्टेंस यूज़ की जाती है ऑफ कोर्स फार्मर्स द्वारा परचेज ऑफ इनपुट्स के लिए परचेज ऑफ इनपुट्स के लिए, कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये हर रेजिडेंट फार्मर के लिए जो कि स्टेट में लैंड को ओन करता है उसके लिए ओपन है ऑफ कोर्स। और ये कंट्री की पहली फार्मर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is rat hole mining. This topic is important for your uh, social issues and your governance section. So 41 workers who were trapped inside the Silkyara barcode tunnel have now been saved using the practice of rat hole mining. So there is a process. Uh, this process also required horizontal auger machine, but it failed. Only after that, rat hole mining started. So what is a horizontal auger machine? So horizontal auger machine is often called a horizontal boring machine or directional drill. So it is a specialized tool to create horizontal bores or underground tunnels without disturbing the surface. It consists of rotating helical screw blades, and these machines are commonly employed in construction. So uh, this machine consists of a drill head with an auger or a drill string attached to it. So hydraulic or mechanical systems power the rotation of this machine, and this machine augers, or it machine this machine advances, it removes the material from the tunnel using drilling fluids. So these drilling fluids serve to lubricate the drilling process, cool the cutting head, and carry out the excavation material back to the surface. So what is then rat hole mining? So this is a properly human carried method to make holes in the mountain or in the mine. So rat hole mining is a method of extracting coal in Meghalaya using narrow and horizontal seams, and the term rat hole refers to narrow pits dug into the ground. And once the pits are dug, miners basically descend using ropes or bamboo ladders, and the coal is then manually extracted using primitive tools. Okay, so there are two types of rat hole mining. The first is the side cutting procedure. And the next is the box cutting. So side cutting procedure is basically when narrow tunnels are dug on the hill slopes, and workers go inside until they find the coal seam. So the other type of rat hole mining is box cutting. So in this type, a rectangular opening is made uh, through, of course, a vertical pit. So, but there are of course environmental and safety concerns. For example, this rat hole mining technique is unregulated. It lacks any safety measures like proper ventilation, structural support, or safety gear for the workers. And the environmental, apart from these environmental concerns, there are also safety concerns because hazardous working conditions are there. Environmental damage happens, of course, and numerous accidents have been reported, which leads to injuries and even fatalities. So it has been banned by the National Green Tribunal already, and the ban has been made because several cases were reported that during the rainy season, the water gets into the mining areas, which has many times resulted into the deaths of many individuals, including employees and workers. So the next topic is Supreme Court panel on Manipur violence. This topic is important for your social issues and your governance section. So Justice Geeta Mittal committee has submitted its interim report to the Supreme Court in reference to the Manipur violence. So this ethnic violence erupted in Manipur between Methi and Kuki tribal communities. So the protest was against the Methi community's demand for ST status, and this violence left more than 70,000 people displaced from their homes. So, Justice Geeta Committee
was formed by the Supreme Court in August 2023 to examine the humanitarian aspects of the ethnic violence in Manipur. So this committee had to submit its report directly to the Supreme Court. And if we look at the major findings of the committee, then the panel has suggested that victims' relatives should be directed to perform the last rites, failing which the Manipur government should do so instead. So what this report is actually saying is that some civil society organizations or NGOs in particular, they are having certain vested interests, or they are basically uh, compelling the relatives of the victims through pressure that these victims families should not accept the bodies for last rites from the government. So these organizations are obstructing the performance of the last rites of the for vested interests, and they are also compelling state authorities to meet some certain unwarranted demands. So civil society organizations have been blamed for this particular conflict by the committee, and the committee has also urged that if needed, then the court should prohibit these civil society organizations from interfering with or obstructing the performance of last rites uh, in this issue. Okay. So the next topic is Mycoplasma pneumonia. This topic is important for your social issues. So recently, authorities in China have reported an increase in the incidence of respiratory diseases, uh, which has which have been attributed to the circulation of various pathogens like Mycoplasma pneumonia. So Mycoplasma pneumonia is a type of bacteria which acts more like a virus, and it spreads faster from person to person. It infiltrates both sides of the lungs, and it is not as rapidly infectious as a virus, but it includes breakup of red blood cells, a skin rash, and joint pain. And children may report a stuffy or runny nose, sore throat, watery eyes, wheezing, vomiting, and diarrhea. So, who is at risk? So, the bacteria can cause pneumonia in any age group, and vulnerable groups who already have respiratory issues are more prone to developing this type of infection. So, the treatment includes multiple antibiotics, which can effectively cure this infection. So, the next topic is Gulf of Aden. This topic is important for your international relations. So, a US Navy warship has responded to a distress call from a commercial tanker in the Gulf of Aden, and Gulf of Aden is an extension of the Indian Ocean, tucked between Arabian Peninsula and the African continent. It has been named after Aden, which is a port city on Yemen's coast. So it is approximately 900-kilometer long. So its dominant relief feature is the Sheba Ridge, which is an extension of the Indian Ocean Ridge system. So it is also a critical part of the Suez Canal shipping route, which connects the Red Sea and the Mediterranean Sea. And some of the major cities on the near the Gulf include Aden, Mukalla, Anwar, uh, Balhaf, Berbera, Bosaso, and Djibouti. So the next topic is Zojila Pass. This topic is important for your economy section. So Indian Army has forged thunderstorms at 11,500 feet near the Zojila Pass to stay battle ready in the harsh winter in J&K and Ladakh. Zojila Pass is also known as the Mountain Pass of Blizzards, and it's a high mountain pass located in the Kargil district of Ladakh. So it is located on the Srinagar Kargil Leh highway at a height of 11,650 feet. So it lies in the Greater Himalayan range, and this pass remains closed for almost half of the year due to heavy snowfall. And it was also the site of the Indo-Pakistan War of 1947 and 1948. So what is this Zojila Tunnel then? So Zojila Tunnel is an under construction tunnel situated at an altitude of 11,578 feet, and it lies on the Srinagar Leh highway in Jammu and Kashmir. So this tunnel provides all-weather connectivity between Srinagar and Leh on National Highway 1, and it will be India's longest road tunnel and Asia's longest bidirectional tunnel. So the next topic is AstroSat. This topic is important for your science and tech section. So India's first multi-wavelength space telescope, AstroSat, has successfully detected its 600th gamma ray burst, which is an event named GRB 231122b. So AstroSat is India's first dedicated multi-wavelength space observatory, which is aimed to study celestial sources
in X-ray, optical, and UV spectral bands simultaneously. So AstroSat was launched by the Indian Space Launch Vehicle (PSLV) in September 2015, and the minimum useful life of AstroSat mission is around 5 years. It carries a total of 5 scientific payloads. So its objective is to understand the high energy processes in binary star systems. It also estimates the magnetic fields of neutron stars. It also studies the star birth regions and high energy processes in star systems. It also aims to detect new bright X-ray sources in the sky, and also perform a limited deep field survey of the universe in the ultraviolet region. So the next topic is Raitu Bandhu scheme. This topic is important for your economy and your governance section. So Election Commission has recently withdrew its permission given to the Telangana government to disburse financial aid to the farmers under the Raitu Bandhu scheme. So Raitu Bandhu scheme is also known as the Farmers Investment Support Scheme, and it's a welfare program for farmers started by the Telangana government in 2018. The objective of the scheme is to provide a timely cash grant for the initial investment needs of farmers, ensure the farmers do not fall into the debt trap, and under this scheme, financial assistance of 5,000 rupees per acre per farmer each season is directly transferred to each farmer's account. So the financial support is distributed biannually, and it is allocated for both the Kharif and Rabi harvests. So the assistance can be used for the purchase of inputs and other investments in the field operations, and the scheme is open to all resident farmers in the state who own land. It is country's first direct farm investment support scheme where cash is paid directly to the farmers. So basically you can compare it with PM Kisan scheme also, which has been built on this particular scheme only. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.